अब हम सेक्शन 3 में आ गए हैं लिसनिंग के और टेस्ट 4 चल रहा है ये। हम आइल्स की स्टूडेंट बुक 9 देख रहे हैं। अब इसमें सेक्शन 3 में कॉन्वर्सेशन है पॉल और कीरा की। अभी आपस में बात कर रहे हैं और कीरा कुछ बता रही है, कुछ जान रही है और पॉल उसकी मदद कर रहे हैं। खास तौर पे कि जब आपने क्या पढ़ा और आप यहाँ आके आपको कैसा किसी दूसरी कंट्री से आए हैं आप, मतलब कीरा दूसरी कंट्री से आई है तो क्या क्या दिक्कतें पेश आई और वो दूसरों के लिए क्या एडवाइस करती है, ये सब चीजें इसमें है। तो ध्यान से सुनिएगा। पॉल बोलते हैं, हेलो कीरा, हाउ आर यू? Fine, thanks, Paul. How are you? Well, thanks. It's good to see you. It must be 12 months since you did our course. That's right. It's nice to come back and say hello. What course did you enroll in? Actually, I went straight into third year pharmacy. They credited me with 2 years, which probably made it more difficult for me. On the other hand, you were lucky to be granted credits. Is that why you chose this course? Yes, and as I would already finished the course in my country, I thought it would be easier if I studied something I already knew. I didn't realize you went into third year. I thought you started in first year. No wonder it was so hard. And what do you think is one of the big differences between studying a university here and studying in your country? Well, I have found it very difficult to write assignments because I wasn't familiar with that aspect of the system here. The main problem is that the lecturers expect you to be critical. That made me feel very terrible. I thought, how can I possibly do it? How can I comment on someone else's research? And they probably spent 5 years doing it. I think a lot of people who come from overseas countries have similar problems. But after a while, it became easy for me. People expect you to have problems with the process of reading and writing, but in fact, it is more a question of altering your viewpoint towards academic study. How was the content of the lectures? Was it easy for you? I didn't really have many problems understanding lectures. The content was very similar to what I've studied before. And what about the lectures or lecturers themselves? Are they essentially the same as lectures in your country? But actually, no. They are much easier to approach. After every lecture, you can go and ask them something you don't or didn't understand, and you can make an appointment and talk to them about anything in the course. Maybe you found them different because you are more mature student now, whereas when you were studying in your country, you were younger and not so assertive. No, I don't think that's the difference. Most of the students here do it. In my faculty, they all seems to make appointments, usually to talk about something in the course that's worrying them. But sometimes it's because something that might really interest them, something they might want to specialize in. The lecturers must set aside certain times every week when they are available for students. That's good to hear. And how was your timetable? Was it a busy year? Very, very busy. They make you work very hard. Apart from lectures, we have practical sessions in a lot of subjects. We did these in small groups. I had to go and work 4 hours every week in community pharmacy. Actually, enjoyed this very much. Meeting new people all the time. And in each second semester, we had to get experience in hospital dispensaries. So every second day, we went to one of the big hospitals and worked there. And on top of all that, we had our assignments, which took me a lot of time. Oh, I nearly forgot. Between first and second semester, we had to work full time for 2 weeks in a hospital. That does sound a very heavy year. So, are you pleased now that you did it? Do you feel some sense of achievement? Yeah, I do feel much more confident.
which I suppose is the most important thing. And have you got any recommendation? Have you got any recommendations for people who are studying from overseas? Well, I suppose they need very good English. It would be much better if they spend more time learning English before they enter the university, because you can be in big trouble if you don't understand what people are saying and you haven't got time to translate. Anything else? Well, as I said before, the biggest problem for me was a lack of familiarity with the education system here. It sounds as if it was a real challenge. Congratulations, Kira. Thanks, Paul. तो आपने कॉन्वर्सेशन देखा पॉल और कीरा के बारे में, और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे. कीरा अपने अपने बारे में बता रही थी, फार्मेसी का कोर्स उन्होंने किया, फिर वो आई, उन्होंने ज्वाइन किया, उनको डायरेक्ट मतलब जो कोर्स वो कर चुकी है वो दोबारा उनको करना पड़ा. फिर उन्होंने बताया कि उनको प्रॉब्लम किस चीज़ से थी, फिर उन्होंने बताया कि लोगों को प्रॉब्लम किस चीज़ से हो सकती है. तो ये सब चीज़ें बातें हुई, आपने ख़ास तौर पे सुना होगा कि उन्होंने क्या बात की. अब हम इसके आंसर सेशन में चलते हैं. क्वेश्चन आंसर सेशन में 21 में पूछा गया है, इन हर होम कंट्री कीरा हैड कंप्लीटेड अ कोर्स. यही मैंने बताया आपको कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड अ कोर्स इन इट माई कंट्री, ये आप कीरा ने बोला था. तो ये इसको हटा दीजिए दोनों को. ए है इसका आंसर. 22 है, टू सक्सीड विद असाइनमेंट्स कीरा हैड टू. एक तो रीड फास्टर, राइट फास्टर, ये तो कहीं नहीं दिया. 22वें में बोला गया था कि इट इज मोर अ क्वेश्चन ऑफ ऑल्टरिंग योर व्यू पॉइंट टुवर्ड्स एकेडमिक स्टडी. ये आखिरी में भी बोला था उन्होंने जब बातचीत खत्म हुई. इसका मतलब ये है चेंज हर वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि उनको बोला जा रहा है कि आप किसी के बारे में क्रिटिकली लिखिए. वो कैसे लिख सकते हैं, ये इस बारे में दिक्कत हो रही थी उन्हें कीरा को. तो 22वें का जो उत्तर आएगा वो सी आएगा. अब क्वेश्चन 23 to 25 हम देख रहे हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, राइट वन वर्ड ओनली फॉर ईच आंसर. 23. Kira says that lecturers are easier to dash than those in her home country. Lecturers are easier to approach. इसमें कहा गया था 23वें में. Here they are much easier to approach. कीरा ने कहा था. 24वें में है, Paul suggests that Kira may be more dash than when she was studying before. 24. तो जब कीरा ने कहा कि बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं आप उसको, ईजियर है, तो पॉल ने कहा था कि यू आर अ मोर मैच्योर स्टूडेंट नाउ, मे बी मोर मेच्योर MATURE मेच्योर आएगा यहाँ पर. 25 में कीरा सेज दैट स्टूडेंट्स वांट टू डिस्कस थिंग्स दैट वरी देम और दैट डैश देम वेरी मच. तो इसमें 25वें में कहा गया था कि समटाइम्स जस्ट अबाउट समथिंग दैट माइट रियली इंटरेस्ट देम. तो देम और दैट डैश देम वेरी मच, इंटरेस्ट देम वेरी मच, राइट, इंटरेस्ट देम वेरी मच. अब 26 से 23 में आ गए हम. आंसर द क्वेश्चंस बिलो, राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स और नंबर फॉर ईच आंसर. 26 में हाउ डिड द स्टूडेंट्स डू देयर प्रैक्टिकल सेशंस. स्टूडेंट प्रैक्टिकल सेशन कैसे करते थे. तो इसमें उन्होंने कहा था कि वी डिड दीज इन स्मॉल ग्रुप्स. तो आप इसके लिए स्मॉल ग्रुप्स लिखेंगे, SG लिख देता हूँ इसके लिए शॉर्ट फॉर्म, स्मॉल ग्रुप्स. 27 में है, इन द सेकेंड सेमेस्टर हाउ ऑफन डिड कीरा वर्क इन अ हॉस्पिटल. 27 में इन्होंने बोला था कि एवरी सेकेंड डे वी वेंट टू वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स एंड वर्क देयर. तो सेकेंड डे, एवरी सेकेंड डे, SD कर देता हूँ इसको. फिर हाउ मच फुल टाइम वर्क डिड कीरा डू ड्यूरिंग द ईयर. 28 में वी हैड टू वर्क फुल टाइम फॉर 2 weeks इन अ हॉस्पिटल. 2 weeks बोला जाएगा, 2 weeks. फिर है हैविंग कंप्लीटेड द ईयर हाउ डज कीरा फील. 29 में तो कीरा ने बोला था कि या आई डू फील मच मोर कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंट. 30 में है, इन एडिशन टू द लैंग्वेज व्हाट डू ओवरसीज स्टूडेंट नीड टू बिकम फेमिलियर विद. अंग्रेजी के अलावा और कौन सी चीज थी जिसके लिए फेमिलियर चाहती थी कीरा कि लोग हो. उसके लिए था, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी वाज लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द एजुकेशन सिस्टम है. बिकम फेमिलियर किससे, एजुकेशन सिस्टम से. तो ES कर दीजिए इसको, एजुकेशन सिस्टम. तो ये बात हुई हमारे सेक्शन 3 की, लिसनिंग के टेस्ट 4. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की.